अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंश्योरेंस में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि इस चैनल के इंट्रोडक्शन में आपको बताया गया था, हम हर टॉपिक पे 3 तरीके से वीडियो तैयार करेंगे। पहले मरहले में हम किसी भी पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट एंडोर्समेंट क्लॉज को इंग्लिश ज़बान में पढ़ेंगे ताकि किसी डॉक्यूमेंट को सही तरीके से पढ़ने का अंदाज वाज़िया हो सके। ये वीडियोस चैनल की प्लेलिस्ट रीडिंग अ डॉक्यूमेंट इंग्लिश में अपलोड कर दिए जाएंगे। दूसरे मरहले में इन तमाम वीडियोस का उर्दू वर्जन तैयार किया जाएगा और ये वीडियोस चैनल की प्लेलिस्ट रीडिंग अ डॉक्यूमेंट उर्दू में अपलोड कर दिए जाएंगे। आखिरी मरहले में इन तमाम टॉपिक्स को तफसीलन डिस्कस किया जाएगा और ये वीडियो हर टॉपिक की मुताल्लिका प्लेलिस्ट में अपलोड किए जाएंगे। आइए देखते हैं आज हमारा टॉपिक क्या है। Earthquake endorsement and clauses. Endorsement, earthquake fire cover. In consideration of the payment by the insured to the company of the name of additional premium, the company agrees, notwithstanding what is stated in the printed conditions of this policy to the contrary, that this insurance covers loss or damage by fire to any of the property insured by this policy occasioned by or through or in consequence of earthquake. Earthquake shock risk. In consideration of the payment by the insured to the company of the sum of additional premium, the company agrees, notwithstanding what is stated in the printed conditions of this policy to the contrary, that this insurance covers loss or damage, including loss or damage by fire, to any of the property insured by this policy occasioned by or through or in consequence of earthquake. Provided always that all the conditions of this policy shall apply, except insofar as they may be hereby expressly varied, and that any reference therein to loss or damage by fire shall be deemed to apply also to loss or damage directly caused by any of the perils which this insurance extends to include by virtue of this endorsement. Clauses. 1. Excess clause. It is understood and agreed that each and every loss under the policy caused by earthquake, other than loss or damage by fire so caused, shall be subject to a deductible of Rs 15,000. Note: well, this clause is not applicable to goods and/or materials stored or lying in the open. 2. Onus of proof clause. In the event of the insured making any claim for loss or damage under this policy, he must, if so required by the company, prove that the loss or damage was occasioned by or through or in consequence of earthquake. जी नाजरीन, इस वीडियो में हमने डॉक्यूमेंट्स के कंटेंट्स को आपके लिए पढ़ा। अगर हम डॉक्यूमेंट्स के कंटेंट्स को सही तौर पे पढ़ पाएँ तो मजमून पे हमारी गिरफ्त काफ़ी हद तक मजबूत हो जाती है। इस वीडियो का मकसद लोगों के लिए इंश्योरेंस के डॉक्यूमेंट को सही तौर पे पढ़ने और समझने में सहूलत पैदा करना है। अगले मरहले में इन डॉक्यूमेंट्स का उर्दू तर्जमा आप लोगों की खिदमत में पेश किया जाएगा। उम्मीद है आप हमें अपनी राय से आगाह करेंगे ताकि हम बेहतर तौर पर इंश्योरेंस की तमाम पॉलिसी एंडोर्समेंट क्लॉजेस को आसान इंग्लिश और उर्दू में ट्रांसलेट कर सकें। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। अपने फीडबैक से हमको आगाह कीजिएगा। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन।